गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सो वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का हमारा पहला टॉपिक है नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम। आपके गवर्नेंस और इकोनॉमी दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो कहा जा रहा है कि अगले साल से जो है बिजनेसेस सिर्फ अपने पैन नंबर की डिटेल्स से ही जो है अपने आप को नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम पर जो है रजिस्टर कर सकेंगे और अप्रूवल ले सकेंगे न्यू प्रोजेक्ट्स के लिए। लैंड भी खरीद सकेंगे, लाइसेंस रिन्यू कर सकेंगे और बेसिकली किसी भी तरह की जो रिटर्न्स भरनी होती है उन्होंने गवर्नमेंट को, वो पैन नंबर से ही भर सकेंगे। तो 27 सेंट्रल डिपार्टमेंट्स, 19 स्टेट्स और यूटीज़ जो हैं वो ऑलरेडी नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम पर जो है वो ऑलरेडी जो है आ चुकी हैं। कुछ पॉलिसीज़ भी हैं जैसे कि व्हीकल स्क्रैपेज, व्हीकल स्क्रैपल, एथेनॉल या लेदर डेवलपमेंट, इन सब की भी जो है आपके जो है सिस्टम्स जो हैं वो ऑनबोर्ड कर लिए गए हैं नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम के ऊपर। तो नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम पता ही है आपको क्या है कि एक डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाया गया है ताकि इन्वेस्टर्स अपने आप को इस पे आकर देख सके कि उनको कौन सा जो है अप्रूवल लेने हैं बिजनेस में करने के लिए, कौन सी, जब चाहे उन्हें किसी भी स्टेट में जाकर अपना बिजनेस सेटअप करना हो, उनको सारे अप्रूवल जो है नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम के थ्रू जो है वो मिल सकते हैं और उनको सारी जानकारी भी इसके थ्रू मिल जाएगी, है ना। सो ऑफ कोर्स स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल मिनिस्ट्रीज, डिपार्टमेंट, सब कुछ जो है वो एक ही प्लेटफॉर्म पर आ गया है और सिर्फ पैन नंबर के थ्रू जो है वो अपने आप को जो है इस पे जो है वो अपना फंक्शन कर सकते हैं। इसको इम्प्लीमेंट कौन कर रहा है? इन्वेस्ट इंडिया इम्प्लीमेंट कर रहा है डीपीआईआईटी के जो है गाइडेंस के अंडर, और वही इसको मैनेज करते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है नेशनल बैम्बू मिशन। एनवायरनमेंट के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है। यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर जो है उन्होंने एक एडवाइजरी ग्रुप बना दिया है कि कैसे वो बैम्बू सेक्टर को डेवलप कर सकते हैं। तो नेशनल बैम्बू मिशन आपको पता है 2018 में जो है कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ने जो है वो अप्रूवल दिया था। एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है जिसके अंदर हम होलिस्टिक ग्रोथ ऑफ बैम्बू सेक्टर चाहते हैं, अवेलेबिलिटी ऑफ क्वालिटी प्लांटिंग मटेरियल देना चाहते हैं हम, ताकि जो है न्यू नर्सरीज बनाई जा सकें और एग्जिस्टिंग वंस को भी जो है वो जो है स्ट्रेंथन किया जा सके। बैम्बू प्लांटेशन को नॉन फॉरेस्ट गवर्नमेंट एंड प्राइवेट लैंड्स पे जो है वो भी बढ़ाया जा सके ताकि जो है फार्म इनकम को सबके एक तरह से सप्लीमेंट्री इनकम भी जो है फार्मर्स को हो सके। अब इसकी इम्प्लीमेंटेशन कौन कर रहा है? स्टेट नोडल डिपार्टमेंट कर रहे हैं, जो कि स्टेट या यूटी गवर्नमेंट जो है वो जो है नॉमिनेट करती है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं कांगर वैली नेशनल पार्क। आपके जो है इन्वायरमेंट के लिए ही इंपॉर्टेंट है। तो 200 बर्ड स्पीशीज़ जो है कांगर वैली बर्ड सर्वे में जो है उनको जो है वो डॉक्यूमेंट किया गया है। तो ये कांगर वैली नेशनल पार्क जो है छत्तीसगढ़ में जो है ये आपके लोकेटेड है और कांगर रिवर यहाँ से गुजरती है, उसी के नाम पर इसका पार्क का नाम रखा गया है। नेशनल पार्क का स्टेटस इनको 1982 में मिला है। यहाँ पर मिक्स्ड जो है डेसिडियस टाइप ऑफ फॉरेस्ट देखने को मिलता है। सबसे इंपॉर्टेंट जो स्पीशीज़ यहाँ पर है वो है बस्तर मैना, और यहाँ पर जो है कुछ केव्स भी हैं जैसे कुटुम्बसर, कैलाश और डंडक, ये स्टैलेग्माइट्स और स्टैलेक्टाइट्स केव हैं। यहाँ पर अंडरग्राउंड लाइमस्टोन केव्स भी हैं जो कि ड्रिपस्टोन और फ्लोस्टोन से बनी है। तीरथगढ़ वाटरफॉल बहुत ही फेमस है, वो भी यहीं पर लोकेटेड है। तो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं कांगर वैली नेशनल पार्क के बारे में। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं स्टार्टअप्स इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन स्कीम। इकोनॉमी के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने रिसेंटली अनाउंस किया है कि जो आईपी जो है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से रिलेटेड चार्जेस होते थे वो अब 50% बढ़ाए जा रहे हैं, पेटेंट्स में भी के लिए भी और जो है ट्रेडमार्क और डिज़ाइन के लिए भी। तो बेसिकली जो आपके स्टार्टअप्स हैं वो पेटेंट्स, डिज़ाइन या ट्रेडमार्क्स लेते हैं और अपने जो है प्रोडक्ट को या अपने सर्विसेज को जो है वो ये फीस देकर जो है अपने आप को पेटेंट करा लेते हैं, है ना। अपने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को जो है वो बचा कर रखते हैं। तो उसी के ही जो है प्राइजेस बढ़ाए गए हैं। और स्टार्टअप जो है अगर किसी को आपको पता है ना कि स्टार्टअप्स के लिए जो ये आईपी की फ़ीस होती है ये बहुत ही कम होती है एज़ कम्पेयर टू बाकी इंडस्ट्री के लिए। तो लेकिन कौन से स्टार्टअप्स जो है उनको ही बेनिफिट मिलता है? तो पहली बात तो आपकी कंपनी जो है वो 7 साल पुरानी नहीं होनी चाहिए। दूसरा, आपका एनुअल टर्नओवर 25 करोड़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और ऐसी एंटिटी नहीं होनी चाहिए कि आपने एक बड़ी कंपनी को जानबूझकर तोड़कर उसको छोटे छोटे कंपनियों में बांट दिया और उसको, ताकि आप ये क्लेम कर सको कि ये सब जो है स्टार्टअप्स हैं। फिर आपको सर्टिफिकेशन भी लिया होना चाहिए स्टार्टअप सर्टिफिकेशन बोर्ड से, तभी आपको इस स्कीम के जो बेनिफिट्स हैं वो मिल सकते हैं। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं सोशल हॉस्टिलिटीज़ इंडेक्स। आपके जो है सोशल इश्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट है। तो वॉशिंगटन बेस्ड एक थिंक टैंक है बहुत ही फेमस, प्यू रिसर्च सेंटर, उन्होंने बताया है कि इंडिया जो है वो टॉप ऑफ द इंडेक्स में आया है जिसमें कि सोशल हॉस्टिलिटीज़ देखने को मिली है कंट्री में इन द ईयर 2020 ड्यू टू द इम्पैक्ट ऑफ कोविड रिस्ट्रिक्शंस। तो ये सोशल हॉस्टिलिटीज़ इंडेक्स जो है उसमें 9.4 स्कोर आया है इंडिया का आउट ऑफ 10, जिसका मतलब है कि हम पाकिस्तान और अफगानिस्तान से भी हमको कम स्कोर दिया
किया गया है इसमें, और 198 कंट्रीज़ इसमें कवर की गई हैं, और ये दिखाया गया है कि प्राइवेट इंडिविजुअल्स, ऑर्गेनाइजेशंस या ग्रुप्स द्वारा जो है वो रिलीजियस हॉस्टिलिटी जो है वो कितनी हुई है। तो इसमें कुछ मैट्रिक्स यूज़ किए गए, जैसे कि रिलीजन रिलेटेड आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट कितना हुआ है, टेररिज्म कितना था, सेक्टेरियन वायलेंस, मॉब, ये सब जो है इसमें फैक्टर इन किया गया है। अमंग द मोस्ट पॉपुलस कंट्रीज़ जो जहाँ पर सोशल हॉस्टिलिटीज़ वेरी हाई थी, वो इंडिया, नाइजीरिया, पाकिस्तान, इजिप्ट और बांग्लादेश रही हैं। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं, इन्फ्लेशन रिडक्शन एक्ट ऑफ 2022, इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो यूरोपियन यूनियन कंट्रीज जो है वैसे तो वो जो है इन्फ्लेशन रिडक्शन एक्ट को जो है वेलकम कर रही हैं, क्योंकि इसमें जो है रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ ट्रांजिशन कर रहा है यूएस, लेकिन फिर भी उनको जो है कुछ जो है कंसर्न्स हैं, क्योंकि उससे क्या होगा कि यूरोपियन यूनियन की जो कंपनीज जो यूएस में काम कर रही हैं उनको अनफेयरली वो डिसएडवांटेज पा जाएंगी। ठीक है, पहले तो देखते हैं कि इन्फ्लेशन रिडक्शन एक्ट है क्या और क्या ईयू कंपनीज को इम्पैक्ट पड़ने वाला है। तो जो ये इन्फ्लेशन रिडक्शन एक्ट है यूनाइटेड स्टेट्स का एक फेडरल लॉ है, जिससे कि यूएस अपने इन्फ्लेशन को रिड्यूस करना चाहता है, डेफिसिट को रिड्यूस करना चाहता है, प्रिस्क्रिप्शन ड्रग प्राइजेस के जो है उसके प्राइजेस को कम करना चाहता है, और डोमेस्टिक एनर्जी प्रोडक्शन को जो है उसमें इन्वेस्ट करना चाहता है, ताकि क्लीन एनर्जी के ऊपर जो है वो जो है इन्वेस्टमेंट की जा सके। तो यूएस बेसिकली अपनी एनर्जी प्रोडक्शन और अपनी हेल्थ केयर कॉस्ट के ऊपर जो है इन्वेस्टमेंट कर रहा है, और सिंगल लार्जेस्ट इन्वेस्टमेंट आज तक की रहेगी ये क्लाइमेट और एनर्जी में यूएस की हिस्ट्री में। लेकिन यूरोप क्यों वरिड है? यूरोप इसलिए वरिड है कि इस इन्फ्लेशन रिडक्शन एक्ट के अंदर कुछ ऐसे प्रोविजंस है जिसमें क्या कहा गया है कि जो कंपनीज डोमेस्टिक जो यूएस की डोमेस्टिक कंपनीज हैं उनको जो है वो बेनिफिट्स मिलेंगे। तो इससे होगा क्या कि जो ईयू की कंट्रीज़ वहाँ पर काम कर रही हैं और उनको जो है सब्सिडीज़ मिलती हैं वो मिलनी बंद हो जाएंगी, या वो यूएस की कंपनीज़ के मुताबिक उनको उतनी सब्सिडीज ज़्यादा नहीं मिलेंगी, तो ऑफकोर्स वो डिसएडवांटेजेस पोजीशन पर आ जाएंगी। सो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है टेक्नोटेक्स 2023, इकोनॉमी के लिए ही टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो इंडिया का जो प्रीमियर शो टेक्निकल टेक्सटाइल्स टेक्नोटेक्स 2023 है वो मुंबई में होने वाला है फरवरी में, और इसको मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स जो है फिक्की के साथ मिलकर जो है ऑर्गेनाइज करा रही है। और बेसिकली जो भी स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर्स होंगे टेक्निकल टेक्सटाइल्स के फील्ड में काम करने वाले, उनको अपने टेक्निकल टेक्सटाइल्स को प्रमोट करने का मौका मिलेगा। तो टेक्निकल टेक्सटाइल्स क्या होते हैं? टेक्सटाइल मटेरियल प्रोडक्ट जो कि मतलब अपने टेक्निकल परफॉर्मेंस के लिए ज़्यादा जो है यूज़ किए जाते हैं एज़ कम्पेयर टू उनकी एस्थेटिक या डेकोरेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स के। ठीक है, तो जैसे आपको पता है कि डॉक्टर जो आपके ग्लव्स पहनते हैं, या जो उनको जो सूट पहनते हैं, या जो फायरमैन अपने कपड़े पहनते हैं, वो बेसिकली वो सब टेक्निकल टेक्सटाइल्स हैं। तो अगर हम देखें तो 13% ऑफ जो इंडिया के टोटल टेक्सटाइल और अपैरल मार्केट है, वो टोटल टेक्सटाइल मार्केट का जो है 13% वो हमारे टेक्निकल टेक्सटाइल ही कंट्रीब्यूट करते हैं। तो टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन भी जो है गवर्नमेंट ने निकाला था, हमने पढ़ा ही है इसके बारे में ऑफ कोर्स, जिसमें कि हम इंडिया को एक ग्लोबल लीडर बनाना चाहते हैं टेक्निकल टेक्सटाइल्स में, और इसके लिए 1480 करोड़ रुपए के आसपास का जो है बजट रखा गया है। और मोटिव ये रखा गया है कि हम एवरेज ग्रोथ रेट 15-20% पर एनम रखेंगे टेक्निकल टेक्सटाइल्स का, और लगभग 40 से 50 बिलियन डॉलर की जो है वो हम डोमेस्टिक इंडस्ट्री बनाएंगे टेक्निकल टेक्सटाइल्स की बाय द ईयर 2024। ठीक है, तो HSN कोड भी देख लेते हैं। HSN कोड जो है हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर का कोड है, जिसमें बेसिकली आप एक 6 डिजिट यूनिफॉर्म कोड होता है, जिससे कि पूरी दुनिया में आप कहीं भी देख सकते हो कि एक प्रोडक्ट का जो कोड होगा वो HSN कोड वर्ल्ड वाइड जो है वो सेम होएगा। ठीक है, सो नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं श्री वेंकटेश्वर टेम्पल, आर्ट एंड कल्चर के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है। रिसेंटली प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी जो है उन्होंने श्री वेंकटेश्वर टेम्पल जो है तिरुमला आंध्र प्रदेश में वहाँ पर प्रेयर्स ऑफर किए हैं। तो ये टेम्पल जो है ये लैंडमार्क वैष्णवाइट टेम्पल है, तिरुमला में लोकेटेड है, चित्तूर डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश के, और ये लॉर्ड श्री वेंकटेश्वरा जो कि इनकारनेशन ऑफ विष्णु है उनको डेडिकेटेड है। वन ऑफ द रिचेस्ट टेम्पल्स इन द वर्ल्ड है। जो तिरुपति लड्डू आपको पता ही है बहुत फेमस है, उनको उसको जो है उस लड्डू को GI टैग भी जो है मिला हुआ है। द्रविड़न आर्किटेक्चर से बनाया गया है। गर्भगृह है जो इसका, उसको हम आनंद निलायम कहते हैं, और जो प्रिजाइडिंग डाइटी है वहाँ पर वेंकटेश्वरा है, जैसा कि हमने बताया। तो ये टेम्पल भी हमारे न्यूज़ में आ गया, तो इसके ऊपर आप क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो। ठीक है, सो नाउ लेट अस सी ऑल दीज टॉपिक्स इन इंग्लिश. So the first topic is National Single Window System. This topic is important both for your governance and economy section. So from next year, the companies or the businesses who have enrolled for National Single Window System, they would just need to fill in their PAN details, and they would be able to get approvals for new projects. They can buy new land, license renewals, and to basically they can file all the returns with just that their PAN number. So
you know that a national single window system is a digital platform whereby the investors can identify and see what kind of approvals they require, and at what level, either at the central government level, state government level, or the local government level. So basically all these ministries, departments, etc. have been onboarded on this portal, so that the investors would find it very easy just by going into this one stop shop of a national single window system. They can get the necessary information from this particular portal only. Okay, so as of now, 27 central departments and 19 states and UTs have onboarded themselves on this platform, and it will also be sending reminders to the businesses for pending compliances, and they can access all the data regarding any government regulation or necessary approvals or licenses through this NSWS. Okay, so it's a single window mechanism. Of course, state government, central ministries, departments all have come onto one on this one platform. So it is being implemented by Invest India under the guidance of DPIIT, which manages the this system. Okay, so the next topic is National Bamboo Mission. This topic is important for our environment section. So Union Agriculture Minister has recently approved the formation of an advisory group so as to streamline the development of bamboo sector. And this, you know that government already runs this National Bamboo Mission, which has been approved by the Cabinet Committee on Economic Affairs in 2018. It's a centrally sponsored scheme, and it aims to promote holistic growth of bamboo sector and to make available the quality planting material to the certain nurseries, and the aim is to increase the area under bamboo plantation in non-forest government and private lands. State nodal departments are implementing this scheme, which have been identified by the concerned state and UT governments. So the next topic is Kangar Valley National Park. This topic is also important for your environment section. So around 200 bird species have been documented under the Kangar Valley Bird Survey, which is of course the first ever systematic interstate bird survey. This Kangar Valley National Park is located in Chhattisgarh, and because the Kangar River flows through this park, that's why it is named after Kangar River, and it has received the national park status in the year 1982. It has a typical mixed humid deciduous type of forest. The most popular species in this area is Bastar Mana, and there are three exceptional caves also located here called the Kutumbasar, Kailash, and Dandak. And there is also underground limestone caves with dripstone and flowstone. So basically stalagmites and stalactites. You may have read about it in your geography lessons. The stalagmites and stalactite caves. So these are also located here. And the Tirathgarh waterfall, very famous, is also located in this Kangar Valley National Park. So the next topic is Startups Intellectual Property Protection Scheme. This topic is also important for the economy section. Ministry of Commerce and Industry has recently announced the increase in the prices of patent filing by almost 50% under the SIP scheme. So this scheme is meant for the startups, and they are already charged very low for the patent and the trademarks and design filing fee. There is very low fee for them, but that fees has been raised marginally by this time, and this aims to basically facilitate the startups so that they can file applications for their patents, designs, and trademarks. So of course, otherwise the patents or trademark fees is very high, but for startups it has been reduced by the government. So any startup which has been certified by Startup Certification Board is eligible to take the benefit of this scheme. A startup means any entity incorporated or registered in India not prior to 7 years, and they should have annual turnover which is less than 25 crore rupees. Of course, if you cannot just fool the government by splitting up your existing company or reconstruct your company or a business which was already in existence, and you cannot just break your big company into small companies and claim it to be all of them to be startups. So once only you obtain the certification from Startup Certification Board, your company or your startup becomes eligible for this particular SIP scheme. Okay. So the next topic is Social Hostilities Index. This topic is important for your social issues. So Washington-based think tank Pew Research Center has recently come out with a study which puts India at the top of its index of social hostilities, of course, with respect to religion. So Pew Research Center has found that India was worse than even the neighboring countries of Pakistan and Afghanistan, and it has scored 9.4 out of maximum possible score of 10. And the report has covered 198 countries,
subsidies. It sees that private individuals, organizations, or groups who have indulged in religion-related armed conflict, terrorism, and mob or sectarian violence. Based upon these metrics, this index has been prepared, and of course, countries which have the most populous countries which have very high level of social hostilities include India, Nigeria, Pakistan, Egypt, and Bangladesh. So the next topic is Inflation Reduction Act of 2022. This topic is also important for international relations. So EU countries may be welcoming the Inflation Reduction Act of the US, but they are fearing that it will put this act would put their companies operating in the US at an unfair disadvantage, because they would miss certain subsidies which have been announced by this act, only meant which would be only meant for the domestic companies of the US. Okay, so this act is basically aimed to curb inflation by reducing the deficit in the US, lowering the prices of prescription drugs, investing into domestic energy production, while also promoting clean energy. Of course, the US has announced the single largest investment in climate and energy in its history. It will be investing in energy production and reducing the healthcare costs for the people. And Europe is concerned because they think that their companies will be cut off from the US tax credits, and about 200 billion euros of the US subsidies, which were meant for everyone, would only be now made available for the locally produced content, which of course it is also violating the WTO provisions. So that's why Europe is concerned about this particular act. So the next topic is Technotex 2023. This topic is also important for your economy section. So India's premier show on technical textiles, called Technotex 2023, will be held in Mumbai in the month of February. It is being organized by Ministry of Textiles in collaboration with FICCI under the National Technical Textiles Commission. It offers a good opportunity for startup entrepreneurs who are working in the field of technical textiles to promote their textiles, of course. They would be The government would be making efforts to make them aware of the PLI scheme benefits, how HSN codes are operate, or even the National Textile Commission, National Technical Textiles Mission. Okay, so what are technical textiles? So basically, any textile or material which is primarily used for its technical performance and not that of its aesthetic or decorative purpose is called the technical textile. So basically, you know that the doctors, what they wear, or the fire brigade force, which whatever they wear. So basically, everything of that sort is technical textiles. So in the total textile and apparel market, about 13% of it is counted by technical textiles, and it contributes about 0.7% to our GDP. So government has also launched this National Technical Textiles Mission, which aims to position India as a global leader in technical textiles. The total outlay for this mission is 1480 crore rupees, and the aim is to grow the domestic market size of technical textiles to about 40 to 50 billion dollar by the year 2024, with an average growth rate of 15 to 20% per annum. So let us also see what is HSN code. So HSN code basically stands for Harmonized System of Nomenclature. It operates at the global level, and it classifies about 5,000 plus products, and it is a unique product for every it's a unique code for every product which is valid or which is accepted worldwide. So the next topic is Sri Venkateshwara Temple. So this topic is important for your art and culture section. So you know that recently President Draupadi Murmu ji has offered prayers at Sri Venkateshwara Temple, which is atop Tirumala, that is in Andhra Pradesh, and this temple is a landmark Vaishnavite temple, and it is situated in the hill town of Tirumala, which is of course located in Tirupati of Chittoor district of in Andhra Pradesh. This temple is dedicated to Lord Sri Venkateshwara, who is the incarnation of Vishnu. It is one of the richest temple in the world, and the Tirupati Laddu, very famous Tirupati Laddu, which is of course enriched with dry fruits and nuts. It's a registered. It also enjoys the registered geographical indication tag. This temple is famous for its Dravidian architecture, and it is believed to be constructed over a period of time starting from 300 AD. The Garbhagriha of this temple is called the Ananda Nilayam, and the presiding deity Venkateshwara stands at the standing posture, and it faces east in Garbhagriha. Okay, so these were our topics for today. We will be meeting next time with new topics. Until then, goodbye and take care.